So let's begin the initial questions. Considering it's a very small passage, and along with the length that we have seen in the sample papers, or we have seen in the past few years of CLAT papers, it is quite iconoclast from that thing, because we usually see the passages are of 200 to 300 words, right? However, if you can see the first passage, it's just about 3 4 lines of some random topic, of a philosophical topic, right? However, it will fetch you 5 marks. So it doesn't matter how long or how short the passage is. What matters is how many marks you can actually fetch from it, right? I hope the screen is pretty visible to you, and you can at least see the first passage. All right. As I already mentioned, the first passage is about a philosophy of wealth, how wealthy one can be, and whether it is right or wrong to have money at your hand, right? You might be having different views from the passage. However, we'll just discuss what's there in the passage. To one small question: how do we start solving critical reasoning questions? Before the beginning of every class, I ask this question so that we don't go wrong in any of our approaches. How do we begin solving any of the questions? First reading questions and then reading the passage. Perfect. We we go into looking at the question stem, and then we move on to the passage. And why do we do so? So that we would know exactly what to search and focus on in the passage while reading it and save time while also understanding better. Exactly. So we don't just wander around whether what we are looking for. We actually need to know. We actually need to save the time in our examination. So we read the questions directly, and then we think, okay, what we are looking for, we directly go and see for the answer. So question one talks about which one of the following is the most logical and rational inference. So at one glance, you can very well understand that this question is asking about inference. So we have to actually stick to the passage. Why? Because inference type of questions cannot be solved without sticking to the passage. तुम इन्फर कहाँ से करोगे कोई चीज? पैसेज से, right? Yes. Another question: according to the author, which of the following is the best possible outcome for a person? अब तुम्हें आउटकम भी निकालना है, तो इसमें क्लियरली बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर. अब ऑथर ने चीजें कहाँ लिखी हैं? पैसेज में. So again, you have to stick to that. Question number third: which of the following, if true, is likely to weaken the argument? A author would be providing some of the arguments in the passage, and whatever is his main argument, you have to try to weaken that. Simple question: what do you understand by weakening the argument? Any one of them. Contradict the author's view. All right, contradict the author's view. And how do you do so? Do you directly simply negate it, or do you actually try to question the validity of his argument? I'm both routes. Both ways. Whatever is given in the option, so the best option you choose, right? Yes. However, do you directly question the integrity of the author? You are not arguing what is wrong is an argument, but do you ever question the integrity of the author? No. No. You don't point out any of the flaws in author's integrity. You point out flaws in author's argument, right? तो अगर बोला जाता है कि हमें ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीकन करना है, तो तुम क्या ये बोल सकते हो कि ये ऑथर है ही पागल? He is so dumb he can never give a logical argument. Can you say so while weakening the author's argument? No. No. Never, right? So this is one of the things, because I was seeing some of the questions in other sheets as well, जिसमें ये चीज mentioned थी
And many students often mark this question कि author logical argument कभी दे ही नहीं सकता, and this type of statements they use for weakening the author's argument. So you don't have to go for it. Clear? Yes, ma'am. All right. Let's move on to the first question, which is asking which one of the following is the most logical and rational inference? Simply, पहले passage समझो. Passage एक simple सी चीज के बारे में बात कर रहा है कि हमारी लाइफ में दो चीज का बहुत ज्यादा यूज है. मानो ना मानो, वेल्थ का इंपॉर्टेंस है, ठीक है. अगर हमें मटेरियल लाइफ में जीना है या हमें एक ऐसे सराउंडिंग में जीना है जहाँ पे हर चीज मटेरियलिस्टिक है, तो हमें भी वेल्थ की जरूरत होगी या हमें प्रॉस्पेरिटी की जरूरत होगी, राइट? इवन फॉर द मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ योर लाइफ यू वुड बी नीडिंग मनी, राइट? तो ऑथर यहाँ पे यही चीज हाईलाइट कर रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रिच or in having some money, right? So this is one of the main contention of the author that you would be seeing further. Then he writes, wealth and physical prosperity are good and useful things. In fact, some of the great sages and teachers in the past have been great kings and princes. And just to substantiate his argument, or just to provide force to his argument, he is adding one line कि वेल्थ गेन करने से या वेल्थ होने से कोई बुराई नहीं है. इवन जो बहुत बड़े प्रिंस रहे हैं या जो बहुत बड़े सेजेस हुए हैं अपने टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट गौतम बुद्ध? मोस्ट ऑफ यू, राइट? है ना. अब गौतम बुद्ध, क्या वो शुरू से गौतम बुद्ध थे कि बचपन में उनका जन्म हुआ एंड ही बिकेम गौतम बुद्ध? दैट वाजंट द केस, राइट? He attained enlightenment, but before that, he was a prince. Anyone? Simple GK question. What was his name before he became Gautam Buddha? Siddharth Gautam. Siddhartha, right? He was the prince, and after realizing that there is no good in this materialistic world, he converted into Buddhism, or he basically converted into a form which later on became a separate sect of a religion, right? बट यही चीज ऑथर ने वेल्थ को सपोर्ट करने के लिए यूज किया है. और वो कैसे किया है कि इट्स गुड कि यू हैव मनी, क्योंकि सेजेस के पास भी हुआ करता था. हैविंग वेल्थ इज वन थिंग एंड क्लीविंग टू वेल्थ इज अनदर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन? एनीवन? It is one of the lines that has the most deep meaning in the entire passage. So what do you understand by it? Having wealth is one thing, while cleaving to wealth is another. Ma'am, I could give it a go, but I'm not really sure about it. Just give it a try. It's fine. I mean, it's one thing to own wealth and to have wealth, but it's another thing to kind of just cling to it and make it your entire existence and run behind it. Exactly, and that's what we are looking for. So your explanation is absolutely correct, Avanti. So cleaving to is a phrase which is usually used for determining something that you are attached to something in certain extent कि you cannot just get away with it, right? एक बार तुम मनी से अटैच हो गए तो तुम उसके बिना रह नहीं सकते. And just not for your जितने में तुम्हारा काम हो रहा है या जितने में बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो रही है उसमें नहीं. क्लीविंग टू मनी और क्लीविंग टू वेल्थ इज समथिंग कि तुम बस अब सिर्फ तुम्हारा सर्टेन गोल जो लाइफ में है ना वो बस यही है, पैसे कमाना. तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें और इंटरनल पीस या तुम्हें इंटरनल वेल्थ की कोई चिंता नहीं. डिड यू गेट द पॉइंट? Yes. Richness of mind and heart is of a different kind. It is deeper richness. अब यहाँ richness भी दो तरीके की हो सकती है. One is material richness, that is having a certain amount of money, wealth, property, and other thing is being kind, being having tranquility and peace at your mind, right? So that is other kind of richness. तो यहाँ पे conclusion में
ऑथर ने यही कहा है. So did you get the point? Yes, ma'am. Is author trying to say that having wealth is wrong? No. No. ठीक है. यूजुअली फिलोसफिकल जब पैसेजेस होते हैं तो फर्स्ट ग्लांस में यही लगता है कि ऑथर यही कह रहा होगा कि हैविंग वेल्थ इज रॉन्ग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. शुड वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस? Yes, ma'am. All right. Put your answers in the chat box. Offline people, you can just shout out your answers. First question, which of the following is the most logical and rational inference that can be made from the above passage? A. One must pursue wealth for his whole life. B. One should not pursue wealth and richness. C. Richness of mind and heart comes only after material wealth. D. Enlightenment is manifestation of richness. Okay, different answers. Any one of you who would like to say why did you choose this particular option? Anyone? Option C. D. One should not pursue wealth and richness. Okay, let's go one by one. So option C says richness of mind and heart comes only after material wealth. Yes. यहाँ पे even when the author was saying कि पहले जो sages थे उनके पास भी wealth हुआ करता था, लेकिन तुम सिर्फ यही conclusion draw नहीं कर सकते, ये सिर्फ यही inference draw नहीं कर सकते हो. There have been multiple sages जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था. Still, they acquired enlightenment and they acquired knowledge, they acquired richness of mind, and they became good sages. Right? So it's not a precursory or it's not a prerequisite of gaining richness of mind. So you cannot infer from the passage. Clear enough? Yes, ma'am. Option A, one must pursue wealth for his whole life. ये भी author नहीं कह रहा था. Having wealth is one thing and cleaving to it is other. You don't have to cleave for it. You don't have to cleave to it. You don't have to just get associated to it to an extent that you leave everything behind and you just run after money. Right? So you don't have to do that. Option B, one should not pursue wealth and richness. अब author ऐसा भी नहीं कह रहा था. Are you getting my point? Author का क्या कहना था? हर चीज का balance out बना के रखो. If you are having richness of wealth, then you should also have richness in mind, right? So the correct answer is enlightenment is a manifestation of richness. और last line में भी author क्या बोल रहा था? Enlightenment कैसे होता है? दिमाग में, when we actually understand the basic principles of life, and then we actually become rich. Clear enough? Yes, ma'am. Any doubts so far? No. All right, because we will be increasing the pace here. Moving to question second. According to the author, which of the following is the best possible outcome for a person? Quickly, answers in the chat box. Just put in your answers in the chat box or just you can shout it out. D. 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 Okay, D for Delhi or B for Bombay? D for Delhi. Delhi, Delhi, Delhi. All right. So I really don't want to see a tussle between Delhi and Bombay favoring people. Just focus on D and B options. So majority of you have said D. However, the people in the online setting, just post your answer in the chat box so that we can start the discussion. Okay, here also it's the tussle between B and D. Chalo, best possible outcome. A, to have a lot of money. Is it the best possible outcome? No. I understand बहुत लोगों का इच्छा हुआ होगा ये मार्क करने का कि इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद टू हैव अ लॉट ऑफ मनी अगर ये बेस्ट पॉसिबल आउटकम नहीं हो तो व्हाई आर वी स्टडिंग, राइट? Yes, ma'am. मतलब हम चिल आउट ही नहीं कर सके, इतना पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्लैट निकाल भी लें, अच्छे लॉ कॉलेजेस में पहुंच भी पाए, प्लेसमेंट भी हो जाए,
फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं. But as per the author, because it's specifically asked कि according to author क्या है. So according to author, best possible outcome ये नहीं है. Option B, to have a big heart and great wisdom. ऑथर ने यही चीज मैं पॉइंट आउट बार बार कर रही हूँ कि ऑथर ने मनी को कहीं भी साइड लाइन नहीं किया है. ऑथर ने दोनों तरह के रिचनेस को साथ में लेके चलने की बात की है कि तुम्हारे अंदर विजडम भी हो, तुम्हारे अंदर एनलाइटनमेंट भी हो, तुम्हारे अंदर नॉलेज भी हो. इज द स्क्रीन नॉट विजिबल? ऑल राइट. तो ऑथर ने दोनों तरह की बात की है कि यू शुड ऑल्सो बी रिच in terms of wealth, and you should also be rich in terms of wisdom. So the most appropriate answer in this case would be option D, that is Delhi. To be rich in the past, but to be rich as well as have a big heart and wisdom. All right, clear enough? Yes, sir. Moving on to next question. Which of the following, if true, is likely to weaken the argument? Quickly, answers in the chat box, other people. Quick answers, जो भी आंसर लग रहा है. ठीक है, most of you have got it right. Others, offline people, what do you think should be the answer? Option B. Saint. अच्छा, ठीक है. अच्छा, what do you understand by the meaning word vices? Negatives. Sorry. Negatives, cons. ठीक है. Anything else? So vices has a very negative connotation related to it, and it simply means doing some immoral acts, right? Now in this context, just each one of you think about your answer and then let me know. Okay. I'm still option B. ठीक है. पैसेज में करना क्या है? Weaken करना है. Weekend करना है. ऑप्शन ए देखो, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न एज अ प्रिंस. ऑप्शन ए तो कतई नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए पैसेज से ही फ्लो हो रहा है. बोला भी क्या जा रहा था कि बहुत सारे जो फेमस सेज या बहुत सारे जो प्रीस्ट रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं, वो पहले प्रिंस थे या वो रिच रहे हैं. ये तो सेम उसी लाइन पे फ्लो हो गया. वो वीक नहीं कर पा रहा. क्लियर? Yes, ma'am. Saint Valmiki was a robber before he became a great saint and poet. It's not weakening the argument. तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है क्या? जस्ट पहले फोकस ये करो. एंड जिसका भी आंसर बी था, वाई बी? Ma'am, because the passage gave, example of Lord Buddha, na, how he was rich, but then he renounced it all and then became a saint and everything. So it was kind of contradicting that example. So I went with B. But what was the main argument of the passage, Avanti? Main argument was about wealth. Have a balance between materialistic wealth and, mental wealth. Exactly. Not mental, but yeah. Yeah, and simultaneously, author was also not demeaning the material wealth, right? Yes. He was kind of in the support of okay, it's nothing wrong to have wealth, or it's nothing wrong to be rich. And for that reason, he substantiated with the fact that many sages have been rich in their early life, right? अब now B option उल्टा चीज बोल रहा है. मतलब ये वीकेंड भी नहीं कर रहा है. It's going somewhere else, and it's saying कि Saint Valmiki was a robber before he became a great saint and poet. तो ये सिर्फ एक फैक्टर को वो नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ एक लाइन को कर रहा है.
एंड जब हमें बोला जाता है weaken the argument, so we look for the argument that is the main argument of the passage and then we try to weaken it instead of just going after one single line. Clear enough? Yeah. Now look at the option C. Mr. Dev developed many vices after he won the grand lottery. अब यहाँ पे author का argument था, even if you had money or wealth in your previous life, still you can become a great saint or great sage after it. But यहाँ पे उल्टा point बोल रहा है कि जब बहुत सारी लॉटरी और बहुत सारा पैसा आया ना, तो इंसान बर्बाद हो गया. The person started doing immoral acts. He started committing bad things instead of moving towards the path of wisdom, of towards the path of sainthood. Clear? Yes, ma'am. Any doubts so far? Should we move on to the next passage? Yep. Next passage is quite a long passage, and most importantly, correct, Raksha. So we have already made a discussion. If you still feel that you need a further discussion on it, just write it in the chat box. Moving on to the next passage. Passage एक simple से issue के बारे में है. So I won't say कि it's an ongoing issue. It's an issue जो चला आ रहा है और it seems to be unending क्योंकि society का mindset change करना it's a huge task, right? Yes, ma'am. So the passage is about giving equal importance to women or giving certain amount of respect and honor or certain rights to women that this society actually owes to them. You are not providing anything additional to them. You are just giving something that you actually owe to them, right? So the passage is entirely about that aspect. अब ऑथर ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? जो भी विमेन की कंडीशन है, जो भी विमेन प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी के एस्पेक्ट में बात की है या फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में बात की है कि विमेन की प्रॉब्लम फेमिनिस्ट थ्योरी या फेमिनिस्ट माइंडसेट के हिसाब से क्या है, राइट? दूसरी है लीगल एंथ्रोपोलॉजिकल. अब लीगल एंथ्रोपोलॉजिकल कैसे होगी कि लीगल एरेना में या जुडिशियल फ्रेमवर्क में या लॉ के एस्पेक्ट में विमेन राइट्स कहाँ पे लैक कर रहे हैं या विमेन को राइट देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं. क्लियर? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि क्योंकि हमारे पर्सनल लॉज बहुत सारे हैं. पर्सनल लॉज किस पे बेस्ड है? रिलीजन पे, राइट? तो जब वो रिलीजन और राइट्स का टसल होता है या रिलीजन और पर्सनल लॉज का टसल होता है, तो हम किसे फेवर करें और कैसे फेवर करें. क्लियर? ये 3 एस्पेक्ट पे बात की है. जस्ट टेक 1 minute, ट्राई टू रीड इट बिकॉज we'll discuss it further. However, I don't want you to miss any of the line क्योंकि it's actually very important. It will help you in solving most of the questions in one go. Just have a look at the passage. It's 1236 till 1238. Read the entire passage. Once you are done reading till Article 14 and 15 of the Indian Constitution, just ask me. I'll move on to the other side of the passage. Is it visible? All right. Yes, ma'am. Read? Yes. All right. Any one of you who would like to explain the passage? Any attempt? जितना समझ आया पैसेज उतना. People in the offline setting? Yes, ma'am. Anyone who would like to explain the passage? What did you get after reading it?
Acha, a small question. How many of you do you remember the recent women rights related judgment that you would have read in news or anywhere? Can you name any? One was there in the passage itself. Can you repeat? Could you repeat? Any one of you? Do you remember any judgment that was solely for giving rights to women? Ma'am, regarding Hindu Succession Act. All right. Do you remember the name of the judgment? No, I just remember the act it dealt with and how it made women equal co-partners along with the male sons in succession Exactly. in property matters and will and everything. In case of there's not a will. All right. So it was basically for the testamentary succession where you don't have a will, and in that particular situation, daughters were given equal rights, similar to the sons that the father, the property to whom would it devolve. Any other judgment? There have been some major judgment in the past few years. One is triple talaq, right? Where talaq-e-biddat was made unconstitutional, and the name of the judgment was Shaira Banu. And what did it actually do? So earlier, the Muslim husbands had the option to simply cite the talaq for 3 times, and then the divorce would commence. However, this system was made unconstitutional after this particular judgment. Anyone, do you have you heard about Sabrimala judgment? Anyone? Quickly raise your hand. How many of you have? All right. So Sabrimala judgment में भी क्या हुआ था? The women were not allowed to enter into the temple premises, and then the judgment was passed in their favor that similar to the men, they also have the right to enter. All right. Yes. अब इसमें तीनों जजमेंट मैंने इसलिए बताए क्योंकि ये 3 एस्पेक्ट से डील कर रहे हैं. फर्स्ट, जुडिशरी ने कह दिया, लेकिन अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी में बदलाव नहीं आते हैं, तो हम कब तक जुडिशरी पर रिलाई करेंगे, राइट? तो इम्पोर्टेंट क्या है? लीगल रिफॉर्म के साथ सोसाइटल रिफॉर्म भी होना. None of them can work without the other, right? ये सोसाइटी सोचने लगे कि ठीक है, हम सब कुछ अलाउ करेंगे, सब कुछ, और फिर जुडिशरी मना कर देती है. जुडिशरी कहती है कि नहीं, it's still the case that you cannot enter the temple or any of the such cases, because you cannot have a unanimous decision in a country like India where the entire population is so diverse, right? So to bring out any change, you need to have social plus legal reform. Clear? Yes. Let's move on to the passage. Let's focus into it, and then we will solve the question. Question is काफी easy है, so you won't face much problem in this. 3 question at the end author pose करता है, वो क्या है कि क्या religion जो पर्सनल लॉ जो रिलीजन पे बेस्ड है. अच्छा, अब तुम्हें सबको पता होगा कि अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मतलब हर रिलीजन अपना लॉ फॉलो करता है, राइट? Hindus follow Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Muslim follow Shariat Act, Christians follow Indian Succession Act and Indian marriage laws, and so on. So except in Goa, we don't have uniform civil code in entire India, right? Clear enough? Yes. तो जो पर्सनल लॉज है वो किस पे बेस्ड है? रिलीजन पे. अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी है जिसके बेसिस पे कोई भी क्लेम्स उठते हैं, राइट? तो ये कितना सही है कि पर्सनल लॉ और फंडामेंटल राइट्स को बार बार
उनको आमने सामने लाया जाए या पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे चैलेंज किया जाए। एक ये क्वेश्चन ऑथर पोज करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस एक्चुअली में ईआरपी टेस्ट के अंदर वैलिड है कि नहीं। सो ईआरपी इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। हिजाब इशू उठा था अभी, उस पर भी क्या क्वेश्चन था कि वेदर वेयरिंग अ हिजाब इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स और नॉट, राइट। तो सिंपली ट्रिपल तलाक कहना भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो हर ऐसे छोटे छोटे मैटर पे इंटरवीन कर सके या नहीं। क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। अब 3 मैटर पे ये पैसेज लिखा हुआ है। पहला है फेमिनिस्ट थ्योरी। अब मैं इसका सीधे क्रक्स बताती हूँ सो दैट वी डोंट लूज ऑन मच टाइम। तो फर्स्ट इज ऑन फेमिनिस्ट थ्योरी, जो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर एग्जिस्ट करता है अपनी सोसाइटी में, ठीक है। जेंडर के बेसिस में बहुत सारे प्रेजुडिसेस अकर करते हैं या बहुत सारे बायसनेस अकर करती है, राइट। तो दैट इज फेमिनिस्ट थ्योरी, जो कहते हैं कि इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन द जेंडर। क्लियर? अदर इज लीगल एंथ्रोपोलॉजिकल विच सेज कि प्रॉब्लम फ्रेमवर्क में ही, और फ्रेमवर्क क्योंकि बेस कर रहा है रिलीजन पे, तो इट्स वेरी हार्ड टू चैलेंज। अब रिलीजन को कोई सीधे चैलेंज नहीं करता है, हमें लिबर्टी मिली हुई है, राइट टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन, राइट। तो उसके आड़ में किए गए इनजस्टिसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं केटर करना, ठीक है। और तीसरा आ जाता है पर्सनल लॉज या जेंडर स्टडीज के बेसिस पे। क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग या जो लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में है, वो बात क्या कर रहा है, शायरा बानो जजमेंट की। अब शायरा बानो जजमेंट में क्या हुआ, ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया गया, राइट। और क्या सिर्फ एक इंसान सामने आया और उसके कारण इतना बड़ा चेंज हुआ? नहीं। चेंज कैसे हुआ? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए उन 5 विमेन के, ताकि इतना बड़ा मेजर चेंज आ सके। क्लियर इनफ? Yes. अगर ये चेंज गवर्नमेंट की ओर से हो रहे होते तो प्रॉब्लम तो आती ही नहीं, राइट। ये स्टेट प्रैक्टिस कर रहा होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं। इंडिविजुअल जा रहे थे तो जिसके सपोर्ट में एनजीओ को आना पड़ा। Shall we move on to questions? पैसेज क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Any doubt? Quickly, question number 4. It's asking which of these questions can be the best conclusion of the passage. You have to focus. Conclusion पूछ रहा है तो conclusion should be something कि जो एक तरफा झुकाव ना हो, पूरे पैसेज को लेके चल रहा। Clear? Quickly, answers in the chat box. Read the options and then mark your answer. Acha, again, conclusion is something that flows from the passage. It is not something where you add a new information, right? Jab we used to write any article or essays, the most important thing that we needed to keep in mind was you cannot add any additional information in the passage or in the conclusion. Conclusion has to be summary or whatever you have written, you just finalize, you give the final wordings regarding it. Quickly, answers in the chat box, offline people, speak out your answers. Okay, some of you have already marked. So why A? Anyone who has marked A?
Anyone who feels the correct answer is A. Why so? Guys, you just have to answer. Why do you feel? It seemed like the best option to me, and I went with a half elimination method too. All right. Anyone else? Why option C? Some of you have marked option C. Why C? Or anyone who would like to add on to the fact why they feel option A is the correct answer. Am I clearly audible Yes. to offline people? Yes, ma'am. Okay. Let's solve this question together. So answer is the A or C दोनों नहीं है. A for one simple reason that you have the better option from it. Option A क्या कह रहा है? It would appear the key question remain unanswered in the area of personal laws, making it a contested terrain where not only is religious freedom played out against gender equality, but these aspects are also intertwined with arguments around identity, nationalism, modernity, and secularism. Identity, nationalism के बारे में कहीं बात नहीं की जा रही passage में, ठीक है? So the intertwining actually takes place in the real life, but it wasn't mentioned in the passage. The passage totally revolved around personal laws and religion, and then women rights. Did you get my point? Option B, notwithstanding the debates about a replacement of the system with a UCC, which date back to pre-independence time, to date the personal laws have been maintained, and the Constitution directive principle endeavor to secure for the citizen a UCC remains unfulfilled. It wasn't talking about the UCC. The main aim was to have women rights and to remove the partiality and the biases that women have to face due to their gender stereotype. Right? It wasn't about defending UCC or whether UCC was better than anything or not. It was about bringing reforms in the personal laws. So UCC cannot be the conclusion since it wasn't mentioned in the passage. Clear enough? Anyone? Any doubts so far? समझ आया passage? Guys, respond. I won't be able to gather whether you are getting the answers or not. Moving on to option C. This legal system of family law should be described as one of the shared adjudication. The state enjoys only restrained autonomy in this area and willingly splits its adjudicative authority with religious and social actors with organization. It is kind of blame gaming the entire thing on government. However, government is not only the sole reason. Okay? The entire system, the judiciary, the government, the society, in all, have been a source of problem to the entire aspect. All right, so the correct answer is the fact that the personal law system is problematic from a gendered perspective is not new. During the last decades, feminist scholarship has succeeded in largely influencing the mainstream discourse in this regard and has made people more gender sensitive when thinking about law and religion. सारे NGOs आए साथ में petition के दौरान क्यों आए? Because now they are becoming gender sensitive. They are actually getting the hold of it. कि both the genders, or not just both the genders, all the genders that exist, be it from any gender of the LGBTQ plus community, right? So each one have their own identity. There's a right to self-identification. There's a right to have all the rights, right? So this is one of the main contention. Did you get the question correct? Shall we move on to next question? Guys, respond. Shall we move on to next question? Yes, ma'am. Quickly, answers in the chat box. This question is pretty small.
so it won't take much time. Which aspects of the personal law system are problematic from a women's rights perspective? And how can these problematic aspects be addressed and reformed? Acha, RPL here stands for religious personal laws. Option B has RPL, and RPL means religious personal laws. Quick answer. What are the problems that actually women face? Answers in the chat box. Or let's discuss it together. Option A, one can find supremely beautiful. Okay, let me check the answer. Option B. Okay. One can find supremely beautiful words in the scriptures of all religion, but at the same time, one can find extremely oppressive, even horrifying words about women in their scriptures. अच्छा, अब सिंपल सी चीज, ऑथर ने या इस क्वेश्चन ने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था पैसेज पे, ठीक है? It simply asked you one thing: which aspects of the personal law system are problematic to women rights perspective, and how can they be addressed or reformed? So option A is also one of the problems कि अगर scriptures में ही लिखा हुआ है कि women are the suppressive partners and you have sole authority to oppress them, then it is problematic, right? I hope none of you disagree at this point. Yes, ma'am. Right? ma'am. So option A is for sure a problem. Moving on to option B, the history of legislative reforms of RPLs in the independent India state shows that the goal of gender equality is frequently subordinated to other political consideration. जहाँ पे politics की बात आई, वहाँ पे ये सारी जो mainstream issues हैं, उनको dilute कर दिया गया. Women rights के बारे में बात ही नहीं की गई, किस पे focus ले आया कि political considerations क्या हैं. ठीक है? तो ये भी एक problem है कि तुम अपने benefit के लिए या अपने political goals को fulfill करने के लिए main issue से digress नहीं कर सकते. Clear? Option C. It is not a subjective exercise to prove superiority or precedence of one religion over the other. It is an objective effort to show that religion has not been a factor responsible for the overall backwardness of women. अब ये क्या है? ये solutions show कर रहा है और अपन को mark क्या करना था? Problem plus reform. The correct answer is all the above. Any doubt? Shall we move on to next question? Yes, ma'am. Quickly, question number 6. Which of the following option is a rescue for status of women due to their personal laws? Quickly, answers in the chat box. Okay, mixed options I can see as the answer. Simply, we are solving question number 6. Okay, some of you have marked option D. Why so? Any justification or you would like to highlight? Any idea why option D do you think is the correct answer? It's simply asking about which of the following is a rescue for status of women due to the personal laws. So technically, it's asking for a solution. Simply, I have already told that there's a need of combination of two things. One is social reform and then other is legal reform. Law is simply an instrument which can help you to rescue or which can help you to strongly affirm the status of women in the society. However,
there's still a need of social reform around it. Did you get my point? Okay. Option A says that the evaluation of the status of women in India has been a continuous process of ups and downs throughout the history. ठीक है, but it is not a rescue sort of thing, right? Evaluation होता रहा है throughout the history, but what next? And we need to find what next, right? So option A cannot be your answer. Option B, it is easy to eradicate deep-seated cultural values or to alter tradition that perpetuate discrimination. It is fashionable to denigrate the role of law reform in bringing about social change. So here it is highlighting about the role of law reform, right? और फिर उससे कैसे तुम social change ला सकते हो? So technically, law is an instrument to bring the changes. Now, how do you use it? That is very important. Clear? Any doubt? Ma'am, can you re-explain? All right. So option B simply, first of all, affirms the fact that it is not an impossible or implausible task to eradicate the discrimination that exists within the society, right? अब अगर ऐसा बोल देता कि ये impossible है, तो फिर उसके बाद तो कोई solution ढूंढने का सेंस ही नहीं बनता. Did you get my point? Yes. पहली लाइन पे ये अफर्म कर दिया कि हाँ देयर इज अ स्कोप टू इम्प्रूव. अब कैसे इम्प्रूव करना है? यूजिंग लॉ रिफॉर्म्स. अब लॉ रिफॉर्म्स लाओगे तो सोसाइटी में चेंज होगा. लॉ रिफॉर्म लाओ ही ऐसे ताकि सोशल चेंज आ सके. क्लियर इनफ? Yes, ma'am. Shall we move on to next question? Which of the following, if true, undermines the argument above? What do you understand by the word undermine? What do you understand? And basically weaken the argument. Sorry? Basically weaken the argument. Weaken the argument, or basically not support the argument, right? One of the same thing. Quickly answers in the chat box. This question is pretty simple and you would actually be able to solve it. Which of the following, if true, undermines the argument above? Any one of you? Let's discuss one by one because all the options seems to be correct in this one. Option C, feminist critique of personal laws is part of a broader set of scholarship that deals with legal norms from a critical feminist perspective, or engages critically with the Indian women's situation in the broader socio-legal condition under which they live. So this is actually what feminist legal perspective do, right? और ये तो passage में भी लिखा था. So it's in the same line. So it's not undermining. Clear? Did you get my point? Yes. Option B, the feminist critique of personal laws was for a long time a minority perspective. However, due to the continuous feminist critique of the mainstream scholarship on the personal laws, the gendered dimension has gained a foothold in the discourse. That is a positive aspect. And that is what the passage was trying to say, that how feminist legal theory or feminist perspective has brought a significant change in the society or in the mindset of the people, right? So it is also not undermining it. So the correct answer is option A. It says that the authorities have been actively and financially supporting the campaigns of non-state actors that support equality, such as grassroots NGOs, local authorities, and academics. Passage में क्या दिया था? उन 5 महिलाओं को कौन सपोर्ट करने आया था? NGOs की गवर्नमेंट बॉडीज? गवर्नमेंट बॉडीज नहीं आई थी, राइट? NGOs ने ये मोर्चा संभाला था. तो ये अंडरमाइन कर रहा है, ये पैसेज के अगेंस्ट जा रहा है. पैसेज को तो कहना यही था कि
इतने चेंजेस गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं हो रहे हैं, हमें इसलिए लीगल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। क्लियर है ना? ये Yes, ma'am. पैसेज क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Next question. Which of these options goes parallel with the content of the above article? So simply a direct question है, so I won't take much time and simply discuss it. Option A, Hindu daughters were deprived of joint heirship in the parental property as per the codes of Mitakshara, a school of Hindu law governing succession. अच्छा, हिंदू लॉ के सक्सेशन को दो स्कूल गवर्न करते हैं, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। ठीक है, दया भागा एक्चुअली वर्क्स इन द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा पार्ट ऑफ इंडिया, और बाकी पूरे कंट्री में मिताक्षरा पार्ट ऑफ हिंदू लॉ वर्क्स, राइट। अब इसमें कह रहा है कि पहले हिंदू डॉटर्स को जॉइंट एयरशिप या को पार्टनर नहीं माना जाता था, उन्हें प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं मिलते थे। ठीक है, तो ये भी सिमिलर लाइंस पे ही बात कर रहा है। पैसेज भी क्या बात कर रहा था कि कौन सी जगहों पे वुमेन डिप्राइव्ड है ऑफ देयर राइट्स। क्लियर? ऑप्शन डी, Christian women could not obtain divorce on the grounds of adultery committed by the husband. It had to be coupled with cruelty. अच्छा, इसमें सिंपली बोल रहा है कि कैसे क्रिश्चियन हस्बैंड्स हैड अ लीनियंट प्रोसीजर जिसमें वो सीधे किसी अपनी वाइफ को अडल्ट्रेस बता सकते थे, वेयर एज women को अगर डाइवोर्स चाहिए होता था तो they had to prove multiple things at one go. So this was discriminatory in nature, right? Option C, 32 years ago, when Shehraz Sheikh filed a public interest litigation challenging the triple talaq given to her by her husband at midnight, it acquired the hue of identity politics. The petition stated that Sharia law subjugated Muslim women by imposing parda, allowing polygamy and unilateral divorce, and depriving divorced Muslim women of maintenance rights. तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी डील कर रहा है कि हाउ यू वर नॉट गिवन द राइट्स और you were taken it as in submissive position. The other partner was in the dominant position, right? Clear? Yes, ma'am. So technically all of them are do run in the parallel context of the passage. So the correct answer is option D. Clear enough? Is the entire passage clear? Any doubt? Considering we just have a few questions left, so I would request to you all to pay entire attention and focus in the class. Shall we move on to next passage? Completely ready, because I expect answers from your end. I don't believe in cold calling people and simply pointing out your names and asking you to answer. And that would be better that if you do it on your own. Okay, so this is particularly about a act. ऐसे पैसेज तुम्हें सिर्फ सीआर के सेक्शन में नहीं, लीगल रीजनिंग के सेक्शन में भी बहुत सारे मिलेंगे। इवन दो लीगल रीजनिंग के सेक्शन में ऐसे ब्रॉडर एस्पेक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं, ईदर इट विल बी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स और आईपीसी और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कभी कभी मिसलेनियस टॉपिक से भी आते हैं क्वेश्चन, और जब आते हैं तो वो ऐसे होते हैं, राइट? क्रिटिकल में तो फॉर श्योर आ ही सकते हैं। अब दिस पर्टिकुलर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट सरफेसी एक्ट। अब सरफेसी एक्ट इज, some people consider it to be a boon to the Indian economy, however some consider it to be a bane, and that is how things work, right? People do have positive and negative Yes. approach towards it. Clear? Simply the passage is talking about how the Sarfaisi Act works and what role has it played in the entire situation. So the first and the foremost thing is, Sarfaisi Act है क्या? Anyone, any idea? घर पे कभी कुछ बात हुई हो या कभी न्यूज में सुना हो? Could you please be a little louder, or could you please come near the microphone and then speak?
It was act for the rising NPS in the bank. All right. Anyone else? ठीक है. This particular act, अच्छा, तुम्हें लोन का सिस्टम सबको पता है? Yes. ठीक है. लोन कैसे वर्क करता है? नॉट जस्ट बैंक लोन्स. अगर तुम किसी इंडिविजुअल से भी लोन ले रहे हो तो हाउ डज इट वर्क? First they charge you a particular interest and a particular time frame, and if you fail to repay them in that specific time frame, you give them some collateral damage, or you put something on a leash and then they take it. So एग्जैक्टली. तो यहाँ पे दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट इज कि हु इज द क्रेडिटर, और क्रेडिटर के पास तुम क्या सामान या क्या कोलेटरल रखा रहे हो. अब कोलेटरल इज सिंपली अ सिक्योरिटी दैट तुम उनके उनके हिफाजत में रखते हो, ताकि in case you are not able to repay the loan, they have the option to simply sell it or to simply use it so that they can recover the cost. Clear? Simply जब बैंक loans लेते हो, for example बैंक गए तुम and then you say that you need a house loan, you are building a house. Till the time you repay the entire loan amount, the bank will actually take the property papers or take the house papers. And once you repay the entire amount, then only the bank will transfer the property in your name. Clear? समझ आया? Yes, ma'am. अब सरफेसी एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट था? तो यूजुअली क्या होता था कि जैसे अगर बैंक में कोई रीपेमेंट नहीं हुई एंड नाउ यू नीड टू रिकवर योर कॉस्ट, अगर बैंक को चाहिए हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपनी कॉस्ट रिकवर करानी हो, तो क्या करना होगा? कोर्ट में अपील, पिटिशन फाइल करो, एंड द लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस विच इज एक्चुअली वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि तुम अपील करो एंड देन तुम्हारी बात सुनी जाएगी कि वेदर इट वाज एक्चुअली पेड और नॉट, एट व्हाट सर्कमस्टांसेस वाज इट नॉट पेड, या तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, या तुम्हारे कुछ हिडन अग्रीमेंट्स थे क्या, एंड सो ऑन. क्लियर इनफ? Yes, ma'am. अब सरफेसी एक्ट ने क्या किया? उसने ये ऑप्शन दिया, सेक्शन 13 स्पेसिफिकली. सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट गिव्स पावर टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर इवन टू evict द टेनेंट. फॉर एग्जांपल, अगर ये टेनेंसी लॉस है या टेनेंसी के लिए लोन लिए गए या कुछ भी तुम्हारा टेनेंसी से रिलेटेड है, तो इट हैड द ऑप्शन कि अगर तुम रीपे नहीं करते हो तो इट वुड सिंपली इवैक्यूएट द पीपल और इवैक्यूएट द पर्सन. ठीक है? तुम्हें ज्यादा झमेला ही नहीं करना है. इस एक्ट के अंदर तुम ऐसे क्विक स्टेप्स ले सकते हो. और ये एक्ट आया ही क्यों होगा? फॉर वन सिंपल रीजन, टू अवॉइड द unnecessary timings that the court procedures take. Clear enough? अब हर एक्ट का अब्यूज तो होता है, पीपल एक्चुअली मिसयूज इट, राइट? तो लोग क्या करने लगे, जब एक्चुअल में जरूरत थी, या लोग नहीं, अभी विद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब देयर वाज अ नेसेसिटी टू गो टू द कोर्ट्स और टू एक्चुअली गो फॉर द एंटायर जुडिशियल प्रोसेस, इवन देन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ नहीं, उन्होंने सरफेसी एक्ट लगाया एंड दे रिकवर्ड देयर प्रॉपर्टी. So this was one of the major loopholes or one of the major drawbacks that this act faced. Clear? yes, ma'am. The entire process under the act involves several factors. अच्छा, अब यहाँ पे to actually avoid the situation or the misuse, entire process को बहुत ज्यादा, एक तरह से मान लो इसको ट्रांसपेरेंट और सैक्रोसैंक्ट बनाए रखने के लिए अटेम्प्ट्स किए गए. ठीक है? और वो क्या थी कि इसमें मल्टीपल टेक्निकलिटीज डाल दिए गए. अब अगर बहुत ही इजी सा एक्ट होता तो इसका एप्लीकेशन इजी होता और ज्यादा मिसयूज होता, राइट? टू अवॉइड पर्टिकुलरली दैट सिचुएशन, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं. During our interaction with the borrowers and banks in the state level inter-institutional subcommittee, we have noticed that the banks jumping into coercive action, throwing overboard the due processes. It is surprising that tech-savvy systems of banks have not put the measured timelines before pressing the red button to put the credit traffic of the MSME on hold. अच्छा, MSME क्या है? Anyone?
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? अब ये क्या है, ये छोटे लेवल के बिजनेस है। अब इनको भी तुम लोन दिए और तुम इन्हें समय नहीं दे रहे हो, तुम सीधे इसको रिकवर कर ले रहे हो इस एक्ट के थ्रू, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। और ये बहुत सारे बैंक इंस्टीट्यूशन कर रहे थे। और ये कैसे पता चला है? आफ्टर आस्किंग अराउंड। क्लियर? अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड? रेज योर हैंड। Me. Yes, ma'am. ठीक है, others simply raise your hand. I'm not gonna ask any quintessential economics ka question because I was from a PCM background. I don't know E of economics. Okay, now this boosted your confidence and many of you started raising your hand. कि cross question तो होगा ही नहीं. All right, simple चीज, अगर एक छोटे से इंसान को, नॉट छोटा सा इंसान एज इन माइनर, एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको अपना बिजनेस शुरू करना है, so what is the most important thing? Money, capital. Capital, right? बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इजिली हैंड रेज कर भी दिए होते तो कोई इकोनॉमिक्स का मैं पूछने नहीं वाली थी कि आई एम नॉट निर्मला सीतारमन, आई वोंट आस्क यू मल्टीपल थिंग्स हियर। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कैपिटल। अब कैपिटल या इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन सरफेसी एक्ट ने एक और चीज भी की थी कि इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस थी ना वो शुरू हो गई, क्योंकि अब लोगों को पता है कि दे कैन रिकवर द कॉस्ट, so they were easily motivated to invest also. Clear? So this was one of the positive aspects. Passage समझ आया? Shall we move on to questions? हाँ या ना? ठीक है. Question number 9. Which of the following option is an assumption for the above passage? पूरा पैसेज क्यों लिखा जा रहा है? पूरा सरफेसी के पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में क्यों बोला जा रहा है? Quick answers in the chat box. सरफेसी की एग्जिस्टेंस के बारे में तुम्हें बताया गया है, क्यों बताया जा रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा होगा, और what is assumption? It is something on which your main argument is based upon. Okay, correct answer in the chat box. Others, put your answers in the chat box. Offline people, what do you think is the answer? I can see each one of you, so don't behave as if you are in school, that you'll see down and you won't be having eye contact and you will be saved. I can see you and I expect answers from you. Let's start discussion because we actually don't have much time. Anyone who feels option A can be the answer, simply raise your hand. None of you, then that's great because it's not the answer. So SARFAISI Act 2002 is a powerful instrument in the hands of the banks and financial institutions as secured creditors. This was directly given in the passage, right? तो ये hidden intent कैसे होगा, या ये इसके बेस पे थोड़ा ना आर्ग्यूमेंट बेस था? अगर ये assumption तुम हटा भी दो तो भी पैसेज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, तो भी पैसेज SARFAISI की पॉजिटिव नेगेटिव बता के रहेगा. Clear? Option B is your correct answer, which says recovery of loans through the usual process of courts is highly time consuming, as the cases in the regular courts are inordinately delayed, but the act is highly technical in nature. ये पॉइंट समझ आया तुम्हें? Yes, ma'am. कि कैसे कोर्ट्स की प्रोसेस बहुत लेंदी थी, बहुत टाइम टेकिंग थी, इस कारण से ये एक्ट बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स.
Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Shall we move on to next question? Yes, ma'am. Which of the following option, if true, undermines the positive aspect of the SURF-IC Act? Answers in the chat box. No. Raksha, option C cannot be the answer because that is not something you are assuming. That is actually given in the passage that what's the rule of SURF-IC Act. That is the major change that it has brought, right? So something that is already given cannot be your hidden intent. However, even if you change, even if you negate, so one of the most approachable method that we look for in the questions of assumption is negation method, right? So if you negate option C, still your passage would sustain. It won't be non-existent. Clear? Yes, ma'am. Okay. Moving on to option question number 10. What should be the answer? अंडरमाइन करना है पॉजिटिव एस्पेक्ट को. पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था? कोर्ट्स का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो सरफाइसी ने कम कर दिया, राइट? अंडरमाइन कैसे करोगे? उल्टा करोगे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, which says the courts of the land unfortunately have been quick in interfering with the SURF-IC action initiated by the bankers even on frivolous motions made by unscrupulous borrowers. assumption क्या था कि SURF-IC कम टाइम टेकिंग होगा और उसके कारण उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होगा, जल्दी जल्दी चीजें सुलझ जाएंगी, राइट? पर इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में? कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं. आपने एक्ट लगाया और फिर तो भी कोर्ट्स इंटरफेयर करेंगे और पूरा पर्पस खत्म हो जाएगा. क्लियर इनफ? Yes. Shall we move on to next question? Which of the following option can be the best conclusion for the above article? Acha, what do we actually add in the questions of conclusion? We actually entirely summarize it. Simple question. What should be the conclusion of the passage? Let's discuss it together and not waste further time. Option C. Okay, let me check the answer first. Option D, none of the above. Okay. Acha, what do you understand by the word accentuate? What do you understand by the word accentuate? It's when you make something more prominent. Or basically you highlight something or you point out something. Highlight something, or make it stand out from the basic whole. Exactly. Or maybe you can point out something. That could also be part of accentuate, right? अब बाकी ये क्वेश्चन सीधा तुम्हारा एलिमिनेशन से हटेगा. Option B. If the borrower does not pay 3 installments continuously after 90 days but up to 12 months, the account becomes substandard and NPA and so on. ये टिपिकल स्टैट्यूट से लाइन ली गई है. ये कोई कंक्लूजन नहीं है. ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स बता रहा है तुम्हें, राइट? So this cannot be the conclusion. Got it? Yes. Option C. But there is a precursor to this action. The bank FI shall serve notice to the borrower to discharge his full liabilities within 60 days. अब ये भी liability कब discharge करना है, कब नहीं करना है, ये इसके बारे में बात कर रहा है. So can this be your answer? Yes. No. Right? क्योंकि ये one of the aspects है. This cannot be your conclusion. अब instead of D, if you go with A, it still would solve your problem. Why? Because it says this act is the need of the hour to ensure accentuate the economy in the country. SURF-IC ने economy accentuate की है. कैसे की है?
इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस नहीं बढ़ते आगे, राइट? So directly or indirectly, this act is the need of the hour. Clear enough? Because better than the other two, we have something, and it's definitely better than to mark none of the above. Clear? Shall we move on to next question? Yes, ma'am. Question number 12. Which of the following, if true, would most strengthen the second para of the article? You have the second para also in front of your eyes, and you have to simply mark the question number 12. Second para was basically talking about the real estate owners. Anyone, what do you think should be the answer? Did you find out the answer? This is quite a complicated one. However, you can simply solve it by elimination method. Which one of the following, if true, would most strengthen the second para? Option A, banks or financial institutions throwing overboard these norms classify all the MSME and PAs as willful defaulters to apply the SRFIC level. This is not the case. This is not the case each time, right? ऐसा मिसयूज करते हैं बैंक्स वगैरह, लेकिन नॉट एवरी टाइम. क्लियर? Option B, as per the act, valuation of the asset has to be done and notify the valuation to the borrower before issuing public notice for auction of property. Bank has to give 30 days. It's again about the procedural aspect of the SRFIC Act. It's not mentioning anything else. Option C, the sudden boost in the real estate market lead to adopting devious methods by certain unscrupulous elements in the real estate market. Second paragraph was all about unscrupulous activities that go behind this particular act, and similarly यहाँ पे भी वही बात की गई है. Clear कि real estate market में how the people take loan and then they don't pay in the hindsight of this particular act and so on. Clear enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it actually clear, or just for the sake of saying yes, you are saying yes? I can easily get what are you up to with those smirks. So kindly focus in the class. Question number 13. How does the enactment of SRFIC Act contribute to the growth of Indian economy? Simply ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है अभी पूरे इस पैराग्राफ में कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप किया है इस पर्टिकुलर एक्ट ने. ऑप्शन ए, all transaction of securitization, reconstruction, and creation of security interest shall be registered with a central registry maintained. It's telling something to do. It's not telling कि क्या हुआ है अभी तक. Clear? Option B, within 30 days of securitizing the asset, details of securities have to be filled with central registry. It's also telling about the procedural aspect. Option D, banks play a major role in providing finance to the entrepreneurs, but when the recovery of the bad loans is delayed, banks will not be in a position to finance fresh loans, thereby failing to do their part in financing the economy. अब यहाँ पे SRFIC एक्ट ने तो यही प्रॉब्लम सॉल्व की, राइट? प्रॉब्लम क्या थी कि they were not able to get their loans back, और फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी. एक बार पैसा गया तो गया,
वो वापस नहीं आ रहा था, तो नेक्स्ट सेट ऑफ लोन्स नहीं दिए जा रहे थे और इकोनॉमी वहां पे बंद हो रही थी, राइट? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत इजी है, तो उसमें अगर ज्यादा दिमाग लगाओ ना लगाओ, एक बात होने वाली है. Some parts of rural eastern Assam, it's a matter of just a couple of minutes more. अगर इस पे फोकस कर लेते हो तो the class can end before 2. So kindly pay as much attention as you can. Some parts of rural eastern Assam are becoming more lenient towards the leopard. What do you understand by this one single line? It's becoming more lenient towards leopard. Anyone? Any guess? They are not killing leopards and protecting leopards. Exactly. Perfect answer. They're not paying as much attention as they should have. वो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं ले रहे हैं और उसकी वजह से शायद कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं that we would be reading further, right? One of the reasons is unmanageable troops of monkeys that even kill chicken for food. अब वहां पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मंकीज है वो बहुत ही अनमैनेजेबल नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है. A deeper study revealed the monkey population explosion was correlated to the dwindling population of leopards. अब ये बढ़ा कैसे? तो अब तुम इंटायर साइकिल समझो. ह्यूमंस ने क्या किया? छेड़छाड़ की इकोसिस्टम के साथ. व्हाट दे डिड? अब असम में, ईस्टर्न असम में बहुत ज्यादा शुगर केन के ऐसे फार्म्स हुआ करते थे. अब शुगर केन के फार्म्स अगर किसी ने एक्चुअल में देखे हैं तो वो बहुत ऐसे हाई फार्म्स होते हैं. शुगर केन खुद में ही कितने कितने टॉल होते हैं, राइट? So leopards usually prefer to live in a hidden place, and that particular sugarcane farms gave them those places. तो जहाँ पे leopards होते थे. अब जब humans ने वो sugarcane हटा के वहां पे टी प्लांटेशन कर दिया, अब वहां leopards तो रहेंगे नहीं, तो leopards का नंबर नीचे गया. जब नीचे गया तो leopards monkey के नंबर को कंट्रोल में रखते थे. कैसे? फूड चेन का पार्ट था, वो monkey को खा जाते थे, राइट? अब जब ह्यूमन ने पहले पहले लेवल पे छेड़छाड़ कर दी कि जहां पे अब प्लांट्स नहीं है, वो शुगर केन्स नहीं है, शुगर केन की जगह टी है, टी की जगह लेपर्ड्स कम है, लेपर्ड्स कम होने की वजह से मंकी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम तो होगी. क्लियर इनफ? स्टार्टिंग पॉइंट समझ आया? द इंटरवेंशन दैट ह्यूमंस डिड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But across. All right. Both monkeys and leopards are highly adaptive and live close to humans. The Kathoni sustained monkeys in the past, not requiring them to raid home, while leopards preyed on the monkeys. Lekin, considering the fact that leopards no more prey on the monkeys, considering their low number, so they do raid homes, they do create nuisance, right? Shall we move on to question? पैसेज समझ आया? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी के बारे में बात की जा रही है कि देयर इज अ स्पीशी जिसको हम कीस्टोन स्पीशी, अब ये कोई पर्टिकुलर स्पीशी नहीं है, ये स्पीशी कीस्टोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू द एंटायर फूड चेन. A keystone species is a species which has a disproportionately large effect on natural environment related to its abundance. Such species are described as playing a critical role in maintaining the structure of an ecological community, affecting many other organisms in an ecosystem and helping to determine the types and numbers of various other species in the community. ये वो species है जिनके कारण बाकी के नंबर कंट्रोल में रहते हैं या बाकी के नंबर डिटरमाइन किए जा सकते हैं. अब इस पर्टिकुलर पैसेज में कौन होगा कीस्टोन स्पीशी? ह्यूमंस, मंकीज, लेपर्ड्स या ट्री गार्डन? Any idea? Any guesses? किसकी वजह से नंबर ड्विंडल कर रहे हैं मंकी के? ठीक है, मिक्स आंसर. देखो, ह्यूमंस के कारण मंकी का नंबर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है, लेपर्ड्स के कारण मंकी का नंबर इम्पैक्ट किया है, ठीक है? और ह्यूमंस के कारण डायरेक्ट कॉज वो नहीं था, वो इनडायरेक्ट एक लेवल पे वर्क किया है. और जो कीस्टोन स्पीशी है
वो कह रहा है कि उसके कारण डायरेक्ट बाकी कम्युनिटी मेंबर्स पे भी लॉस हो रहा है. क्लियर? सो करेक्ट आंसर would be leopards. Any doubt? Shall we move on to next question? What do you understand by domino effect? Chain reaction. चेन रिएक्शन कि एक पॉइंट अगर तुमने उसका टच कर दिया तो पूरी की पूरी चेन पे इफेक्ट होगा. ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डोमिनो इफेक्ट कहां से शुरू हुआ? लेपर्ड्स का मरना, किलिंग ऑफ चिकन बाय मंकीज, प्लांटिंग टी प्लांट्स या कटिंग शुगर केन? एनीवन? Killing of chicken by leopards. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. सबसे पहला स्टेप क्या था? शुगर केन जैसे ही हटा, लेपर्ड्स का नंबर डिक्रीज हुआ, उनका नंबर डिक्रीज हुआ तो मंकी का इंक्रीज हुआ, एंड सो ऑन. क्लियर इनफ? Yes, ma'am. All right. Which of the following is the most appropriate message from the passage? इससे क्या सीख मिलती है? Leopards thrive on monkeys, which keep the population of monkeys and leopards in check. क्या सिर्फ इसके बारे में हम बात कर रहे थे? या humans should not disturb the delicate ecosystem? या monkeys and leopards are highly adaptive? या humans and wildlife cannot sustain? Humans और wildlife साथ में रह ही नहीं सकते. क्या ऐसा situation है? बी फॉर बॉम्बे. B. P, right? Human should not disturb the ecosystem. जो जैसा है वैसे रहने दे. ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो ऐसे इम्पैक्ट्स होंगे. क्लियर? यस. ओके. बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू. बहुत लोगों ने सुना है. ठीक है, किस एस्पेक्ट में बात की जाती है इसकी? विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी, वेदर यू एक्चुअली हैव प्राइवेसी और नॉट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड क्लैट फॉर्म्स? Then what? क्लैट फॉर्म किसने किसने भर दिया? या कोई भी लॉ एंट्रेंस, एमएचसीटी या कोई भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. HCT का हो गया है. Flat का भी हो गया है. Flat का भी हो गया है ना? अब कुछ दिन बाद अचानक से मैसेजेस आने लगेंगे रैंडम लॉ कॉलेजेस के, जिनके तुमने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे. ऑलरेडी आने लग गए. आ गए? अब बताओ पिछले साल से आ रहे हैं. कहाँ से? पहले से ही आ रहा है. आई गिव माई क्लैट लास्ट ईयर टू फॉर एक्सपीरियंस, सो तब से आ रहे हैं. राइट. शारदा यूनिवर्सिटी और लवली यूनिवर्सिटी और ब्यूटी यूनिवर्सिटी और स्वीटी यूनिवर्सिटी, रैंडम यूनिवर्सिटी के आएंगे कि आप लॉ कर लीजिए, हम इतने % स्कॉलरशिप देंगे. फिर बीच में कॉल्स आएंगे, फिर बीच में मैसेजेस आएंगे. होता है. यस. सो हाउ फार डू यू थिंक योर डेटा इज प्रोटेक्टेड? नॉट वेरी वेल, आइड से. राइट. क्योंकि तुमने तो क्लैट कंसोर्शियम में फॉर्म भरा, पर तुम्हारा नंबर सर्कुलेट हुआ कैसे? और अगर सर्कुलेट हुआ भी तो हाउ डू दे नो कि तुम्हें करना क्या है? Artificial intelligence. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जब तुम अगर Amazon या मिंत्रा पे कुछ चीज सर्च करते हो, उसके एड इंस्टा और फेसबुक पे दिखाने शुरू हो जाते हैं तुरंत. हाँ. So can you guess the level of monitorship that you actually face on a day-to-day basis? तुम्हें पता भी नहीं, तुम रियलाइज भी नहीं करते हो. और होता क्या है, फेसबुक में जब एड दिखा रहा होता है तो वी एक्चुअली स्टार्ट स्लाइडिंग थिंग्स कि हाँ अच्छा ये भी देख सकते थे, ये भी देख सकते थे, और फिर सीधे शॉप नाउ के ऑप्शन पे चले जाते हैं एंड देन वी गेट बैक टू दोस एप्लीकेशन. और सेम चीज ही क्यों दिखा रहा होता है? इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ ड्रेस, देन तुम्हें ड्रेस ही क्यों दिखाएगा? अ सिमिलर टाइप ऑफ ड्रेस ही क्यों दिखाएगा? Yes, ma'am. राइट. अब यहाँ पे दो जन की कॉन्वर्सेशन हो रही है कि क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी या प्राइवेसी. ठीक है. तो एंडी इज अ पर्सन, ही सेज कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. अब उसके लिए अगर ऐसा होता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी बच सकती है, अवॉइड हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है, तो आई एम रेडी कि मेरे ऊपर ऐसा सर्वेलेंस रहे. ठीक है. आई डोंट माइंड टिल द पॉइंट आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसा कहना है एंडी का. क्लियर. तो वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है ऑन वन कंडीशन कि उसने खुद भी कुछ गलत नहीं किया है, सो ही इज वेरी वेल ओके
with the fact कि ठीक है तुम surveillance करते रहो. Clear? Whereas Sandy contradict कर रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए to have a check on each and every step of us. Why? क्योंकि एक तरह से ये अनइजीनेस का फीलिंग रहता है कि कोई ना कोई हमें हर वक्त देख रहा है. जो हमारी पर्सनल चीजें हैं वो पर्सनल रहे. हमारी क्या प्रेफरेंस है फूड चॉइसेस में, वो जोमेटो पे अपन चेक कर रहे हैं, दैट्स इट. उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे शो ना हो, राइट? अगर मैं अगर बिरयानी चेक कर रही हूँ तो आई डोंट वांट टू सी मल्टीपल एड्स ऑफ करीम्स ऑन इंस्टाग्राम. आई वांट अ सेंस ऑफ प्राइवेसी देयर, राइट? Yes, ma'am. Clear enough? Yes. Under the shroud of security, personal privacy cannot be compromised. अब ये यहाँ पे सैंडी का स्टेक क्या है कि प्राइवेसी शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी, वेयर एज एंडी का है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट में चल जाएगी चीजें. क्लियर? एक और चीज, लेकिन सैंडी ने कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं किया है. उसने बस प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस दी है. उसने ये नहीं कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन हो रही है. क्लियर इनफ? शुड वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस? Which of the following statement will most likely strengthen the argument of Andy? Andy का argument क्या था? To strengthen national security and prioritize it instead of privacy. Seventeenth का answer. Also, this is basically conversation-based type of question. So, think and mark. Sandy is involved in illicit activities, hence is supporting privacy. Was it the case? और how does it actually matter? Because Andy के argument से related नहीं है और अपन को Andy का argument strengthen करना है. Being nationalist and prioritizing security over privacy is in vogue. ये trend पे चल रहा है. ऐसा नहीं है. ये Andy का argument strengthen नहीं कर रहा है. So B cannot be the option. Option C. Government has solved multiple terror and murder cases by compromising personal privacy. यही तो argument कह रहा था कि कम से कम टेरर एक्टिविटीज हट रही है, भले हमें पर्सनल प्राइवेसी को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. क्लियर इनफ? तो ये एंडी के आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है. एनी डाउट? No, ma'am. क्वेश्चन 18. Which of the following is the most logical convergence of the debate between the two? किस बात पे वो बात कर रहे हैं? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. पर्सनल प्राइवेसी शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड ओनली रेयर सिचुएशन. एक जन बोल रहा है कि टेरर एक्टिविटीज को बचाने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी रेयर सिचुएशन की बात कर रहा है. और दूसरा सैंडी पर्सनल प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो एनी डाउट इन दिस वन? No, ma'am. क्वेश्चन 19. इन सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द स्टेटमेंट डज एंडी से ही इज क्लीन? किस बारे में ये कह रहा है, किस सपोर्ट में वो कह रहा है? क्या नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए वो ये कह रहा था, या अपनी पर्सनल प्राइवेसी को जाने देते वक्त कह रहा था? ये दो अलग अलग चीजें हैं. एक है कि तुम कह रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और एक जगह तुम कह रहे हो कि मैं अपने पर्सनल प्राइवेसी त्यागने को तैयार हूं कंसीडरिंग कि मैं तो क्लीन हूं. तो व्हाट इज ही डूइंग? इज ही डूइंग बी और सी? ही इज डूइंग सी. He is saying so to support his argument against personal privacy. Against personal privacy. अगर यहीं पे वो खुद गलत होता तो वो पर्सनल प्राइवेसी को जरूर प्रायोरिटाइज करता. क्लियर? Shall we move on to the last? Option D. And what is Option D, to support his claim that he is hygienic. वो साफ सुथरा है. Literal meaning में देखो जरा. Oh, I'm so sorry. I read the wrong question. Sorry. It's okay. I thought we were समझ doing आया? 18. Yeah. ठीक है. Shall we move on to the last passage? Yes. Yes, ma'am. I'm very sure कि तुम्हारी criminal law की classes हो गई हैं. हाँ, ma'am. What do you understand? What is the difference between murder and culpable homicide? There's a minute difference. What Ma'am, is the it? ambit and intention. All right. Anyone else? Just you have to be louder. I cannot hear you. ठीक है.
शॉर्ट में समझाते हैं. मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड. सो culpable homicide is given in section 299 whereas murder is given in section 300. ठीक है, इतना तो समझ आया किस सेक्शन में दिया है 5pc में. अब बस इसमें डिग्री ऑफ इंटेंशन का रोल होता है, इसमें डिग्री ऑफ एक्शन का रोल नहीं, इसमें डिग्री ऑफ इंटेंशन का रोल होता है. एक जगह है जिसमें तुम कह रहे हो कि तुम उसे ऐसा एक एक पर्सन एक्स वाई जी एबीसी को मार रहा है और इस इंटेंसिटी के साथ मार रहा है कि ही नोज दैट वो ऐसा मारेगा, ऐसा ब्लो देगा, ऐसा शॉट देगा फॉर सपोज कि वो मर ही जाएगा. ठीक. और दूसरा होता है कि वो ऐसी बॉडीली इंजरी देगा कि जिससे चांसेस है मरने के, पर श्योर शॉट नहीं है कि वो मरेगा ही मरेगा. गॉट इट. तो जिसमें श्योर शॉट है कि वो मर ही जाएगा दैट इज मर्डर, और जिसमें चांसेस है मरने के लेकिन ये श्योर शॉट नहीं है कि वो मर ही जाएगा उस एक्शन से, इंटेंसिटी है पर पक्का पक्का नहीं है, दैट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड. सिंपल सा इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है. लोग हमारे यहाँ खुद भी जब क्लासेस हुई थी 1.5 मंथ्स हमें सिर्फ इसका डिफरेंस बताया गया था, और समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो इट्स नॉट नेवर गोना कम. आया समझ? यस मैम. अगर तुम किसी को, तुम ऐसे बहुत ही अच्छे शूटर हो और तुम किसी को हार्ट में शूट करते हो, इंटेंसिटी हाई है, इंटेंशन पता है तुम्हें कि ये डेथ कॉज करेगा और डेथ कॉज करना चाहते हो तुम, तभी तुम हार्ट पे शूट कर रहे हो, राइट? यस मैम. वो मर्डर होगा. पर तुम उसको शोल्डर पे शूट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो ये मर जाएगा, या थोड़ा सा निशाना ऊपर नीचे हुआ तो वो हार्ट में टच करके निकल जाएगी गोली, वो कल्पेबल होमिसाइड है. समझ आया? अब इंडिया में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे टसल चलता है, लेकिन बाहर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे मर्डर का डिग्री भी डिवाइड हो जाती है. क्लियर है? बस इतना सा पैसेज है, easiest passage of the lot apart from that monkey one. Should we move on to the questions? Question number 20. Which of the following, if true, provides the most support for the mentioned difference for the concepts in the above article? Quickly see the options and mark your answer. Option A, the defendant cannot be proved to be acted upon any intention to act recklessly against the victim, but the only way to convict that offender is to prove that he was a part of such felony when occurred. Is it so? फेलिनी का पार्ट बता दिया या उसका एक पार्ट बता दिया और तुम उसे मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए लेके आ जाओगे? कतई नहीं. ऑप्शन बी, द एक्ट शुड हैव एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ टू अ पर्सन. दिस इज व्हाट सेड एज कल्पेबल होमिसाइड व्हिच अमाउंट्स टू मर्डर एंड दिस इंक्लूड्स ओमिशन एंड द इलीगल ओमिशन एज वेल. ये सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये एक एडिशनल फैक्ट लेके आ रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड टू मर्डर क्या होता है. ठीक है, जिसमें ओमिशन भी पार्ट होता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर इंसान को इंसुलिन उस वक्त पे नहीं देते हो और तुम्हारी जिम्मेदारी थी देना, और तुम वो ओमिट करते हो वो एक्शन इंटेंशनली कि ताकि उसकी डेथ हो जाए, उसका शुगर लेवल इतना हाई होगा कि 2 सेकंड नहीं लगेगा, सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे उसके. ठीक है, तो वो ओमिशन वुड अमाउंट टू योर इंटेंशन कि जिसके कारण तुम्हारी डेथ हो रही है, राइट? क्लियर? तो ये एक एडिशनल चीज लेके आ रहा है, तो दिस कैन नॉट बी द सपोर्टिंग आर्गुमेंट. ऑप्शन सी, द एक्ट शुड बी डन विद अ क्लियर इंटेंशन टू किल अ पर्सन. द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन शुड बी इन अ कॉन्शियस स्टेट वेयर द पर्सन इज aroused and he must have deliberately acted particularly to kill a person. ये इंटेंशन किस सिचुएशन में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में है. whereas option D is the correct answer which says killing a person can happen on various occasions which include a planned assassination to a free fight which may lead to death of one person. ये डिग्री बता रहा है कि हो सकता है ऐसे धोखे से हो जाए, हो सकता है नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है तुम चाह नहीं रहे हो कि इसकी डेथ हो ही हो, पर तुम्हें पता है कि डेथ हो सके, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, या तो तुम चाह रहे हो. क्लियर? Shall we move on to the second last question? Yes Ma'am, ma'am. why option not C? Sorry? Ma'am, why option C is not correct? क्योंकि वो इंटेंशन किस फेज में होना चाहिए, तुम सही स्टेट में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके बारे में एडिशनल फैक्ट बता रहे हैं, स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं.
वो देखो Okay. ना, वो लिख रहा है कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में। अगर हैड इट बीन द केस कि वो बोलता कि तुम्हारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि तुम इस तरह से मार रहे हो या ऐसा कुछ होता, तो हम मार्क करते। क्लियर? Yes, ma'am. व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी इन द गिवन आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट में क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या लूप होल या क्या ग्रे एरिया है? द ऑफेंडर has the knowledge that his intention to cause an bodily injury is likely to cause death of the person. ये discrepancy नहीं है, ये already existing fact है. Option B, that is the correct answer. Intention in doing an act is purely a mental state of a person which can never be deduced accurately. तुम intention कैसे पता करोगे, right? और यही एक लूप होल है कि तुम्हें circumstances से पता करना होता है. जजेस भी क्या करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते हैं. किसी के दिमाग में घुस के तुम नहीं पता कर सकते ना कि तुम्हारा क्या इंटेंशन, राइट? तो इट हाईली डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, और यही डिस्क्रिपेंसी. क्लियर? Yes, ma'am. Last question of the passage. Which of the following can be a conclusion for the above article? Option A, it appears that the intention is the important ingredient in deciding between murder and culpable homicide, and the proof of intention is determined by the severity of the act, which may not give appropriate results. For sure, ये तो सही है, इसमें कोई भी flaw ही नहीं है. Option B, when dealing with concept of culpable homicide, section 299 of IPC comes into play. This section says that whoever causes death to a person by doing certain act with an intention of causing death or with the knowledge of doing such act to cause death to a person is said to be offense of culpable homicide. ये भी सही है, यही चीज facts में दी हुई थी, right? So our correct answer would be both A and B. Both A and B. Clear enough? कोई doubt पूरे sheet में? Ma'am. Sure? Yes, ma'am. Because we still have time, you can still clear your doubts. Give us some tips. Though I'm very sure that most of you are very eager to just run away, considering the sheet is also done. I could hear the fake yes during entire classes. समझ आए ना यार, yes बोलो और आगे बढ़ जाओ. We understood it. ठीक है, all right. पूरा पैसेज समझ आए, सारे पैसेज समझ आए? Yes, ma'am. Just go through the Sarfaisi Act वाला passage once again, या just go through the entire passages once again, और एक बार ये नजर मारना कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज लेंथ बहुत वेरी की है पैसेजेस की. छोटे से छोटा पैसेज में भी 5-5 क्वेश्चंस थे, राइट? और ऐसा ही पेपर बनेगा. कोई पेपर ऐसा नहीं बनेगा कि 10 एकदम फुल साइज पैसेज दे दिया हो और फिर तुम सॉल्व ना कर पा रहे हो, राइट? On this note, I'll end the class here.